learn about the Buffett indicator. Now, all of us know who Warren Buffett is. He does not need any introduction. To quite some terms, we can actually say he's one of the best till date. He's a legend. To quite an extent, rightfully so, he is God to all the investors and traders out there. Right? He's a trailblazer. तो उन्होंने जितना वॉरेन बफेट ने अचीव किया है स्टॉक मार्केट में किसी ने भी अचीव नहीं किया और कोई उनके पास भी नहीं है. Now, जब भी वॉरेन बफेट की बात होती है, right? Whenever we talk about him investing, जो भी इंटरव्यूज होते हैं आप देखोगे उनके, he will always talk about one specific tool. और वो टूल का नाम है द बफेट इंडिकेटर. एक्चुअली दिस इज दैट इंडिकेटर जो उन्होंने खुद बनाया है. ही हैज इन्वेंटेड इट हिमसेल्फ एंड बिकॉज ऑफ विच इट इज नेम्ड आफ्टर हिम. उनके ऊपर इसको नेम कर दिया. ठीक है. सो यू कैन ऑल्सो से दिस इज वन गाइडलाइन फॉर हिम where he refers to this every single time and it is his principle. And just imagine it is being created by him, तो उनके नाम पर ही बफेट इंडिकेटर को रख दिया है. Now, what does the Buffett indicator indicate? It indicates whether the stock is overbought या फिर oversold, right? Whether it is overvalued or undervalued. Buffett indicator आपको ये बताता है and this is a fundamental indicator, right? So obviously when it's overbought या उसको बहुत oversell किया गया है, overvalue किया रखा है, तो obviously you will sell. In the other situation, you will of course buy. Right? Now guys, ये indicator, now is it the absolute final thing? नहीं. अब होता क्या है? There are two types of indicators. So let me give you an example. Okay. Now, एक indicators level पे होंगे आपके macro level पे. Right? Now, what are macro level indicators? सबसे पहला, there are two things. First, there is macroeconomics, right? Then there is microeconomics. दो चीजें होती हैं. Macro, micro. अब macro means जो बहुत बड़े स्केल में देखा जा रहा है और micro means छोटा. तो suppose I'll give you an example. If I study, give me a film's name, Gully Boy. Okay, so recently I was watching this film. That's why. Okay, so if I study Gully Boy, तो मैं Gully Boy को स्टडी कर रहा हूं तो ये क्या हो गया? माइक्रो इंडिकेटर. बट अगर मैं बॉलीवुड को स्टडी कर रहा हूं तो ये क्या हो गया? मैक्रो. राइट? सो इन इकोनॉमिक्स इटसेल्फ अगर मैं पूरी वर्ल्ड की इकोनॉमी ले रहा हूं, ठीक है, तो ये हो गया मैक्रो. बट अगर मैं सिर्फ इंडिया की इकोनॉमी ले रहा हूं तो ये हो गया माइक्रो. सो मैक्रो जूम्ड आउट वर्जन है, माइक्रो बहुत स्पेसिफिक है. राइट? सो दो चीजें होती है. अब दोनों को स्टडी करना इक्वली इंपॉर्टेंट है. कैसे? सबसे पहले व्हेन यू स्टार्ट यू लुक एट द मैक्रो लेवल्स. आप देखते हो कि आपकी कंट्री ठीक है. राइट? इज द कंट्री ओके? इज द ओवरऑल सिचुएशन ओके? इसमें क्या आ जाएगा? आपकी इकोनॉमिक्स आ जाएंगी, इसमें आपकी पॉलिटिकल सटाइज आ जाएंगे, इसमें आपके डेमोग्राफिक सटाइज आ जाएंगे, सब चीज आ जाएंगी टू सी कि अच्छा ओवरऑल कंट्री ठीक है कि नहीं है. फिर माइक्रो लेवल पे यू विल लुक एट द स्पेसिफिक स्टॉक्स. आप जब माइक्रो लेवल देखोगे फिर आप एकदम पर्टिकुलर एक स्टॉक देखोगे. ठीक? सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्टडीज. पहले हम मैक्रो करते हैं और फिर हम माइक्रो भी करते हैं. ठीक है? उसके बाद ही वी मेक द डिसीजन टू बाय और सेल. ये स्ट्रैटेजी होती है हमेशा. Now, on the macro basis, let me take both for रुको. So I'm just fundamental analysis को मैं FA लिख रहा हूं यहाँ पे, technical analysis को लिख रहा हूं TA, and this is behavioral finance, right? अब अगर आप एकदम macro level में देखना चाहते हो ना, overall दूर से कि is this country doing well or not, should you look into stock markets or not? या तो stock market बहुत overbought या oversold तो नहीं है. अगर वो situation है, so fundamentally क्या tool होता है? सबसे पहला हो गया there is the index PE. Right? So index PE, like we discussed, should be between 14 to 28. अब अगर index मतलब Nifty and Sensex, अब उनका price earning ratio is more than 28, इसका मतलब we should sell, it is overbought. और उनका price earning अगर is less than 14, इसका मतलब the best opportunity for us to buy. ठीक है? तो आप देखोगे that in February 2020, Jan 2020, index का PE went up to 2930. Right? Then technical analysis में क्या होता है? Technical analysis में सबसे पहला Dow theory. Second, we have 200 DMA. ठीक? And behavioral finance में it's basically greed and fear. जो I would suggest, I think सबसे ज्यादा important होता है. Right? So it's greed and fear. ये सारी चीजें. अब अगेन इनके नीचे पूरी लिस्ट बनती है. फिर इनके नीचे आते हैं माइक्रो इंडिकेटर्स. Right? Now in micro indicators में, let me just draw this perfectly for you. Right? अब इन माइक्रो इंडिकेटर्स में देन वी हैव टूल्स टू स्पेसिफिकली एनालाइज. जैसे टेक्निकल एनालिसिस में जाएगा RSI, राइट? देयर विल बी मूविंग एवरेजेस, देन देयर विल बी बोलिंगर बैंड्स,
ठीक है, अब फंडामेंटल एनालिसिस में क्या हो जाएगा, देयर विल बी पे बैक पीरियड, ठीक है, देन उसके बाद आपका हो जाएगा वी सी द टॉप लेवल मैनेजमेंट। तो ये मैं आपको एग्जांपल्स दे रहा हूं, सो दिस इज हाउ द एंटायर स्टडी इज स्ट्रक्चर्ड। ठीक, नाउ यहां पे एक और आता है और उसको हम बोलते हैं द बफेट इंडिकेटर। Now, Warren Buffett always uses this. हर इंटरव्यू में he talks about the Buffett indicator, and for him, Buffett indicator से you can't make the decision to buy or sell a specific share. आप एक स्पेसिफिक शेयर खरीदने का डिसीजन नहीं लेंगे। द बफेट इंडिकेटर हमें बताएगा कि मार्केट्स अभी घुसने लायक है भी कि नहीं है, शुड वी इवन थिंक ऑफ इन्वेस्टिंग द मार्केट्स और नॉट, सिंपल, दैट इज व्हाट द बफेट इंडिकेटर टेल्स अस। नाउ ये हो गया, ठीक है, so अभी तक सब क्लियर है, सो कमेंट करो एवरीथिंग इज क्लियर सो दैट आई कैन मूव फॉरवर्ड। अगर माइक्रो में एनी डाउट्स आर देयर, इफ देयर एनीथिंग लेट मी नो। Okay, Puneet, yes. Krish, all clear. Okay, clear. Okay, so DMA, guys, DMA is daily moving average. So जो moving average होती है, उसमें EMA होती है, that is exponential moving average. Then there is SMA, simple moving average. DMA, daily moving average. So there are very little variations. जिसमें एक weighted average है, एक में simple average है. As of now, just take it as a daily moving average. What is DMA? हर दिन की closing price की moving average. Simple. All clear. Everyone is clear. Excellent. ठीक. तो यहाँ पे we've understood Buffett indicator क्या होता है और Buffett indicator क्या situation होता है. ठीक है, ये हम समझ गए. Let me just ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड। अब बफेट इंडिकेटर होता क्या है? बफेट इंडिकेटर इज सिंपली मार्केट कैपिटल अपॉन ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इनटू 100। दिस इज व्हाट द बफेट इंडिकेटर is, and again this has been discovered or invented, whatever you may like to call it, by Warren Buffett himself, right? And he always uses this. So as of now he sold all his stocks. Why? Because of this indicator itself. वो हम आगे जाके ग्राफ में देखेंगे that what is the situation. Now पहले let's understand the formula. ठीक है, market capital upon GDP into 100. Now I'm sure बहुत लोगों को पता होगा what is market capital in GDP, और a lot of people may not be because वो बहुत लोग नए भी आए हैं. So I'm going to take 2 minutes each to explain what is market capital and what is GDP. ठीक है, सबसे पहला मार्केट कैपिटल। नाउ मार्केट कैपिटल क्या होता है? इट इज द करंट मार्केट प्राइस, जो शेयर प्राइस अभी मार्केट में चल रही है, द करंट मार्केट प्राइस विच एट विच द स्टॉक इज ट्रेडिंग एट, इनटू नंबर ऑफ शेयर्स। ये तो हम सबको क्लियर है। अब इसमें डिफरेंस ये है, ये जो मार्केट कैपिटल है ना, दिस इज ऑफ द एंटायर इंडेक्स, पूरी इंडेक्स का मार्केट कैपिटल। मैं एक शेयर की मार्केट कैपिटल की बात नहीं कर रहा हूं, मुझे पूरा इंडेक्स का मार्केट कैपिटल चाहिए। यू कैन ऑल्सो कॉल इट दिस इज द कंट्रीज मार्केट कैपिटल, राइट? सो इफ आई टेक एनएसई, ठीक, तो एनएसई में अराउंड देयर 1750 शेयर्स लिस्टेड, 1750 शेयर एनएसई में लिस्टेड है। उन सब का मार्केट कैपिटल एड अप करके जो मार्केट कैपिटल आएगा, दैट विल बी द टोटल मार्केट कैपिटल। सो दिस इज द टोटल मार्केट कैपिटल। सो अगेन मार्केट कैपिटल ये एक किसी कंपनी का नहीं है, ये पूरी इंडेक्स का मार्केट कैपिटल है, ये पूरी कंट्री का मार्केट कैपिटल है, ठीक है। बट अगेन अब टोटल मार्केट कैपिटल लेते हुए मैं आई वुड नॉट ऐड, मैं बीएसई एनएसई दोनों का टोटल मार्केट कैप ऐड नहीं करूंगा, ओनली वन इंडेक्स, राइट? सो फॉर अमेरिका इट कैन बी डाउ जोन्स और नैस्डैक, फॉर जर्मनी इट विल बी डैक्स, फॉर हैंगसेंग, फॉर हांगकांग इट विल बी हैंगसेंग, जापान निकी। सो दैट्स द कांसेप्ट। मार्केट कैपिटल क्लियर हो गया। अब उसके बाद आता है जीडीपी। नाउ व्हाट इज द जीडीपी? ठीक है, अब जीडीपी क्या होता है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सबको पता है, इजी है। अब इसको और अगर मैं इजीली समझाऊं और इक्वेशन समझाऊं, जीडीपी इज द टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन एन इकोनॉमी फॉर दैट फाइनेंशियल ईयर। जीडीपी क्या होता है? पूरे इकोनॉमी में, पूरे देश में जितने अमाउंट, जितने वैल्यू के गुड्स और सर्विसेज बनाए गए हैं, प्रोडक्ट्स और सर्विसेज बनाए गए हैं, उन सब का वैल्यू एक फाइनेंशियल के साल, एक फाइनेंशियल ईयर में, दैट इज द जीडीपी। नाउ एज ऑल ऑफ यू नो, हर कंट्री को मेजर करने के लिए जीडीपी बेस्ट इंडिकेटर माना जाता है, ठीक है। अब जैसे आज का, ओके, रीड अबाउट दिस, इज आल्सो इंटरेस्टिंग। अ लॉट ऑफ पीपल आर सेइंग कि जीडीपी इज नॉट अ गुड इंडिकेटर, ठीक है। अब होता क्या है, जब भी किसी हम कंट्री की बात करते हैं, राइट, इफ यू वांट टू कंपेयर टू कंट्रीज, वी बी लाइक चाइना इज डूइंग बेटर देन इंडिया बिकॉज़ चाइना इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग जीडीपी इन द वर्ल्ड, इंडिया इज द सेकंड फास्टेस्ट ग्रोइंग जीडीपी इन द वर्ल्ड, राइट? सो हमेशा किसी भी कंट्रीज का कंपैरिजन आप देखोगे जीडीपी के बेसिस में होता है। अब जीडीपी में एक बहुत मेजर इशू है, जीडीपी में इशू ये है दैट इट इज कैपिटलिस्ट इन नेचर। जीडीपी सिर्फ अमीरों को ही बेनिफिट करता है। कैसे? जीडीपी ना ये नहीं देखेगा कि कितनी डिस्पैरिटी है इकोनॉमी में, कि व्हाट इज द एजुकेशन लेवल,
व्हाट इज द हेल्थ केयर अवेलेबल ऑप्शंस, जीडीपी ये सब देखता ही नहीं है, जीडीपी सिर्फ बात करता है इकोनॉमिक्स की, जीडीपी सिर्फ बात करता है पैसों की। तो ऐसा हो सकता है इन अ कंट्री, नाउ सी इफ यू टेक अमेरिका, राइट, अमेरिका इज द हाईएस्ट जीडीपी इन द वर्ल्ड, इट इज अराउंड 210 ट्रिलियन, राइट, 21 ट्रिलियन डॉलर्स की जीडीपी है उनकी। अब does it mean that every American is rich? नहीं, 70% of the Americans are not rich at all, they're on credit. 28% of the Americans are just living on quits basis. It's only the 2% Americans जो actually अमीर है, वो 2% Americans not only in America, वो पूरी दुनिया में सबसे अमीर है, राइट? तो अब जीडीपी उसको नहीं देखता, जीडीपी बस देखेगा कि रिच कितने हैं, तो इट विल नॉट सी डिस्पैरिटी इन द इकोनॉमी। सो लॉट ऑफ पीपल ये भी आर्ग्यू करते हैं कि सर चलो इंडिया की जीडीपी बढ़ रही है, इंडिया इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग जीडीपी, मगर गरीब की हालत और भी खराब होती जा रही है, राइट? तो जीडीपी इसको काउंट नहीं करता। तो इसके लिए क्या आता है कि एचडीआई, व्हिच इज द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। नाउ एचडीआई क्या करता है, एचडीआई टेक्स आपका वो कल्चर का भी उसको कैलकुलेट करेगा, आपके एजुकेशन लेवल्स कैलकुलेट करेगा, आपके एक एवरेज आदमी का हेल्थ केयर लेवल्स कैलकुलेट करेगा, हैप्पीनेस इंडेक्स कैलकुलेट करेगा, तो बहुत सारी ऐसी चीजें भी कैलकुलेट करके एचडीआई निकलता है। सो लॉट ऑफ स्पेशली यूएस में तो बहुत चल रहा है, सो इफ यू सी पब्लिक हेल्थ वगैरह, ऑल ऑफ देम आर डिबेटिंग फॉर द फैक्ट कि जीडीपी को हटाओ और एचडीआई को लाते हैं, ठीक है? नाउ अगेन ये तो मैं थोड़ा एक्स्ट्रा बता दिया, बट एज ऑफ नाउ तो हम जीडीपी को ले रहे हैं कि जीडीपी को ही मानते हैं, ठीक? सो टोटल मार्केट कैपिटल ऑफ द इंडेक्स दैट इज द कंट्री अपॉन जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑफ द कंट्री, ऑफ कोर्स, ठीक है? दिस into 100, this is the Buffett indicator, people also call it the market cap is to GDP indicator, ठीक है? क्लियर हो गया? अब आगे बढ़ते हैं। अब इसमें कॉन्सेप्ट क्या होता है, let me, हाँ, now if this indicator, ठीक है, so I'm going to write the BI, if Buffett indicator is more than 100, what should you do? If Buffett indicator is more than 100, you should sell. On the other hand, if Buffett indicator is less than 100, you should buy, ठीक है? तो इन सिचुएशन में क्या बताता है, that if Buffett indicator is less than 100, then markets are undervalued, whereas if the Buffett indicator is more than 100, उसका मतलब क्या है, the markets are overvalued, ठीक है? तो दिस इज द सिचुएशन। अब इसमें एक डिफरेंस एक और है, ये जो 100 की रीडिंग है ना, ये रीडिंग अमेरिका की है। नाउ अनदर प्रॉब्लम जो बहुत लोग फेस करते हैं इज दैट व्हेन वी रीड बुक्स, ठीक है, जब हम स्टॉक मार्केट की बुक्स पढ़ रहे हैं, अब वो होती है इंटरनेशनल ऑथर्स के, इफ यू एक्चुअली वांट वेरी गुड बुक्स, वो सब इंटरनेशनल ऑथर्स के। नाउ ऑब्वियसली बिकॉज दे आर बेस्ड इन अमेरिका, मोस्ट ऑफ देम, सो देयर बुक्स केटर टू द अमेरिकन इक्विटी मार्केट इटसेल्फ। उनकी जो बुक्स होंगी वो डाउ जोन्स और नैस्डैक की सराउंडिंग होंगी, क्या वो एनएससी बीएससी को केटर करेंगी? नहीं। एंड इफ यू सी ना, अमेरिकन और इंडियन मार्केट्स में बहुत डिफरेंस है, बहुत डिफरेंस है। मैं आपको बफेट इंडिकेटर समझाता हूं। नाउ बफेट द क्या कहते हैं, द बेंचमार्क फॉर बफेट इंडिकेटर फॉर अमेरिका इज 100, ठीक है? इफ इट्स ओवर 100 और बिलो 100, तो दिस इज द बेंचमार्क फॉर बफेट इंडिकेटर इन अमेरिका, whereas in India it is not 100. In India it is 76. If it's more less than 76, then you should buy. If it is more than 76, then you should sell, right? And guys, again, इसकी recording आप सबको मिलेगी, but still if you have doubts, keep on taking screenshots so that you recall everything. Now you might ask, why is this difference? ऐसा क्यों है? How can the same indicator be different for two separate markets? Comment करो, मुझे comment करके बताओ, what do you think? ऐसा क्यों है? Why are the indication levels different for America and different from India? So if you're wrong, it's completely fine. What do you think it is? So we take nominal GDP, Vishnu, normal GDP, नहीं Vishnu, that is not the case. Growth, okay, Rajkumar, growth बहुत बड़ा word है, I want little more specific. Difference of GDP, वो तो दिव्यम है, but थोड़ा specific और बताओ. Then Amit says money value, नहीं, money value नहीं. It would, good point actually, but not directly, right? Then exchange rate नहीं, inflation नहीं, standard of living, Then Karan says GDP and market cap is different both in countries. It is, तो हम तो different countries के लेंगे Karan. So why is that कि इन दोनों का standard different है? इसका actual reason ये है that India is an unorganized economy. इसका actual reason है, sorry मैं उसको थोड़ा dramatic करना चाह रहा था. Okay, so इसका actual reason है black money. This is the actual reason. Why is this the reason? अब इसको देखते हैं. Abhi, I'm talking about the GDP. Now in America, right? This is America. This is India. Now in America, we have an organized sector. Everything is through banks.
everything is noted for, right? So yes, every economy has a certain amount of gray market into it, black market होता ही है, but इतना मेजर नहीं है, it's not even considerable, it might be 1 or 2% of the GDP maximum. While in India हमारी black economy कितनी बढ़िया, I don't need to tell you, you know it yourself. If you come from business families, if you're running a business or if you're into a job, you know it. हमारे देश की आधी इकोनॉमी इज इन ब्लैक, राइट? डीमोनेटाइजेशन डिड हेल्प, बट आई डोंट थिंक इट मेट ऑल द स्टैंडर्ड्स और एक्सपेक्टेशन इट वाज मेंट टू बी. उससे डीमोनेटाइजेशन ज्यादा फर्क नहीं पड़ा है. तो हमारे देश में ब्लैक इकोनॉमी बहुत मैसिवली है, ब्लैक मनी बहुत मैसिवली है. ये दो सेपरेट इकोनॉमीज है जो हमारे देश में चल रही है, वन इज द व्हाइट एंड वन इज द ब्लैक, राइट? अब अगेन इसके एडवांटेजेस भी होते हैं, डिसएडवांटेजेस भी होते हैं. सो दिस ऑल दिस टाइप ऑफ इकोनॉमी, बोथ ऑफ देम दे हैव द एडवांटेजेस एंड देयर डिसएडवांटेजेस आल्सो. अब okay, now you all know the disadvantages. What are the disadvantages of black economy? Disadvantages ये होते हैं that there obviously people won't be filing in tax, right? Obviously there will be gray market, obviously unaccounted money है, ठीक है? अब अगर unaccounted money है किसी भी इकोनॉमी में, तो वो उस इकोनॉमी की ट्रू पिक्चर शो नहीं कर रहा है, राइट? तो इफ यू सी द क्रेडिट रेटिंग ऑफ इंडिया, जो इंडिया की क्रेडिट रेटिंग है वो अभी BBB है, which is average. But if you add the black money, black economy into it, अगर हम किसी तरह उसको एक फिगर में ले हमें फिगर मिल जाए, तो वो उसकी रेटिंग बहुत हाई हो जाएगी. हमारी जीडीपी यहाँ से 30 to 40% बढ़ सकती है अगर ब्लैक इकोनॉमी आ जाए तो, ठीक है? सो दीज आर डिसएडवांटेजेस ऑफ इट. बट लाइक आई ऑलवेज टेल यू, हर चीज का एडवांटेज भी होता है एंड एवरीथिंग हैज अ डिसएडवांटेज आल्सो, राइट? सो व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ दिस, एंड दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग. नाउ आई एक्सप्लेन इन वेरी सिंपल वे. थोड़ा मैं ऑफ टॉपिक जा रहा हूं बट जरूरी है समझाना. अब दिस इज एन इकोनॉमी, ठीक है? अब मैं आई वांट टू स्टार्ट विद बैंक्स, ठीक है? नाउ बैंक्स में व्हाट इज द मेन लोन? व्हेनेवर आई कॉल अ बैंक, या बैंक की लोन की बात करते हैं, इट्स मेन लोन ऑफ एनी बैंक इन द वर्ल्ड इज हाउसिंग लोन, ठीक है? कोई भी बैंक हाउसिंग लोन से सबसे ज्यादा कमाता है. व्हाई? बिकॉज इसमें ये बड़े अमाउंट का लोन है तो इंटरेस्ट ज्यादा मिलेगा एंड ये ज्यादा टाइम फ्रेम के लिए रहता है, और ये ज्यादा हैवी ड्यूटी लोन है. सो कार लोन्स, ऑटोमोबाइल लोन्स, एजुकेशन लोन्स इज अ वेरी वेरी स्मॉल बिजनेस फॉर अ बैंक. मेन बैंक का लोन काम होता है हाउसिंग लोन में, ठीक है? Now let's take an hypothetical example that ये property है मेरी पूरी, ठीक है? And this property is worth rupees, let's say 1 lakh, ठीक है? 1 लाख रुपीस की प्रॉपर्टी है. अब किसी भी बैंक में अगर if you have ever taken a loan, आपने कभी भी लोन के लिए ट्राई करोगे, there are two things. First, there is quantum, then there is margin, right? Quantum and margin. Now quantum is the amount, this is the amount that the bank will pay, whereas margin is the amount that you will pay. Quantum, अब जब बैंक के पास आप गए 1 लाख के लोन के लिए, क्या बैंक will the bank give you 1 lakh rupees complete loan? नहीं, the bank will only give you the quantum part. Rest margin you have to give. Quantum is around 75 to 70%. तो 1 लाख में से बैंक आपको लोन सिर्फ 70 to 75K का ही देगा, बाकी 20 to 25,000 आपको अपनी पॉकेट से डालनी पड़ेंगे. So आप समझो what is quantum, what is margin, right? अब अमेरिका में तो you know India, why do we call India one of the safest banking economy in the world? Because India में this quantum is very high. In America the quantum is 1%, 2%, and quite a lot of cases अमेरिका के बैंक्स में quantum होता ही नहीं है, ठीक है? बिकॉज वहां पे वो बस लोन दे दें. अगेन उसका एडवांटेज क्या है कि उनकी इकोनॉमी बहुत जल्दी बढ़ेगी. डिसएडवांटेज क्या है? जब वो गिरेंगे तो बहुत गंदा गिरेंगे, राइट? सो दैट इज व्हाई इफ यू सी इन द 2000 क्रैश आल्सो, जो बैंकिंग क्राइसिस थी, इंडिया वाज सेफ टिल क्वाइट टिल एक्सटेंट. नाउ सेकंड थिंग, अब थिंक अबाउट दिस. अब दोबारा ब्लैक मनी में जा रहा हूं. नाउ इफ द बैंक गिव्स यू अ लोन, लेट मी टेक अ फ्रेश शीट, राइट? सो बैंक हैज गिवन यू अ लोन फॉर 75,000 एंड 25,000 इज फ्रॉम योर पॉकेट, और ये पूरा 1 लाख का है. अब टेल मी दिस, अगर मैं किसी बैंक से इंडिया में लोन लूंगा तो ये जो पूरी प्राइस होगी, जिस प्राइस मुझे लोन मिलेगा, will this be white or will this be black? This will be complete white. Why? Bank will only give you loan on the white amount, black में देगा नहीं. Now suppose if this is the person and he defaults, वो लोन नहीं दे पाया, so when the bank goes to sell this property, auction करेगा, तो क्या उसको 75,000 मिलेगा? नहीं, उसको एक्चुअल मार्केट रेट मिलेगा जिसमें होगा व्हाइट प्लस ब्लैक बोथ. सो अब देखो एडवांटेज क्या होगा. व्हाई आर द इंडियन बैंक्स सो सेफ? सो अगेन आई एम नॉट एनकरेजिंग ब्लैक मनी बाय एनी मींस, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू टू लॉजिकली एनालाइज इट. हर चीज का एडवांटेज भी है, डिसएडवांटेज भी है, ठीक है? तो इसका एडवांटेज ये कि हम बहुत सेफ बैकग्राउंड में खड़े हुए हैं. डिसएडवांटेज क्या है? इंडियन इकोनॉमी कभी आगे नहीं बढ़ पाएगी, ये स्लो डाउन करें इंडियन इकोनॉमी को बहुत मैसिवली, ठीक? सो इज दिस क्लियर? ओके, कमेंट करो दिस इज क्लियर सो दैट आई कैन मूव अहेड, ठीक है? सो कमेंट इफ दिस इज क्लियर. कोई डाउट हो मुझे बताओ.
Okay, Harsh, how Harsh already how to adjust buffer indicator for different countries. Harsh, abhi I'll come to that. Yes, clear, 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 clear. Then Gravit, then Semant, Vikas, clear, Vishnu, Rohit, Neeraj, Arjun. Okay. So again, we took this little extra topic, but I think this was necessary to make you understand that how do both situations help you, right? Up coming back to this again. Up America में, what is the Buffett indicator standard? 100, below 100, buy, above 100 sell. Whereas in India, it's 76 because India में we have an unorganized sector because India is a victim of black money. तो इसलिए ये 76 है और काफी हद तक ना ये टूल हम इंडियन मार्केट्स में यूज ही नहीं कर सकते. Why am I telling this? Because the Indian GDP is not the true picture. अब आप खुद देखो, in this situation you are taking the market capital and the GDP, market capital of the entire index, पूरे सॉरी नॉट द इंडेक्स, पूरा एक्सचेंज, आप पूरे एक्सचेंज का मार्केट कैपिटल ले रहे हो, टोटल मार्केट कैपिटल अपॉन द टोटल जीडीपी. अब इसमें जीडीपी का फिगर गलत है, इट इज नॉट द ट्रू रिप्रेजेंटेशन. तो क्या ये कभी फॉर्मूला वर्क करेगा? नहीं, ये रेशियो तो वर्क कर ही नहीं सकता, राइट? तो इसलिए हम ये इंडिया में कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं. इफ यू सी राइट नाउ, इफ यू गूगल राइट नाउ, द बफेट इंडिकेटर राइट नाउ इज इन इंडिया इज 54, राइट? द बफेट इंडिकेटर राइट नाउ in India is 54. So technically 54 is lesser than 76, right? 54 is clearly lesser than 76, so you should buy. Technically the cheez hai. Now for America the Buffett indicator is 100. अब let me show you, I'm just अभी मैं screen share करना stop कर रहा हूँ. Let me show you the Buffett indicator. Now this is a screenshot which I had managed for you. ठीक है, एक सेकेंड, सॉरी. ठीक है, this is the screenshot. आप इस स्क्रीन में देखो ऊपर, this is a Buffett indicator variant. ठीक है. Now again this is for the American index. From 1970 to 1975 to 2020. Now whenever the Buffett indicator goes above 100%, it falls. So if you see this line of 100%, it went up to 136 and it crashed. और ये कब गया था? This is around the year, around it was 99 2000 के around. It crashed. Then again Buffett indicator was crossed at 105, वो 100 के ऊपर चला गया, it crashed. Again keep this in mind. Is this a specific stock? No, this is not a specific stock. This ये पूरा मार्केट को ओवरऑल दिखा रहा है. मैं मैक्रो लेवल पे मार्केट को स्टडी कर रहा हूँ, राइट? सो आई एम जस्ट सीइंग अ गाइडलाइन कि क्या मैं अभी मुझे मार्केट में इन्वेस्टर होना चाहिए या नहीं, शुड आई बी एंटर्ड इन द मार्केट्स और नॉट. सिंपल. अभी आई एम नॉट इवैल्यूएटिंग स्टॉक्स. दिस इज नॉट दैट इंडिकेटर फॉर दैट. इफ यू वांट टू इवैल्यूएट स्टॉक्स माइक्रो लेवल पे, ये इंडिकेटर उसके लिए नहीं है जो मैं समझाता. ये इंडिकेटर है मैक्रोस के लिए, ठीक है? अब again this is the 2000 crash. If you see यहाँ पे, जब यहाँ पे if you can see my pointer, so it went up to 105%, 0.2, it again crashed. Now it has went to 138%. I don't know how clearly can you see it, जहाँ पे yellow arrow है, right? 138%, which is the highest. It is the highest. And Warren Buffett has sold all his portfolio. Not because he thinks कि उनके shares खराब है, नहीं. Because he thinks markets on overall is at a very overbought situation. It is extremely overvalued. ये बहुत ज्यादा market overvalued है. इसीलिए इन्होंने अभी अपना portfolio clear कर दिया. Again, what is the exact amount he's cleared the portfolio? वो तो सिर्फ rumors ही है. But what is the interview is, what the rumors surrounding is, इन्होंने बहुत majority अपना stake portfolio का clear कर दिया है because of this. And when will he buy again? जब Buffett indicator इसके नीचे आ जाएगा. You can call the market cap to GDP indicator. I personally like it to call the Buffett indicator. उसको बोलते भी Buffett indicator है, so you can choose whatever, whichever one you like. आप देख रहे हो? अब जो हम बात कर रहे थे, इंडिया का बफेट इंडिकेटर इज 56, इंडिया का बफेट इंडिकेटर इज 54, whereas यूएसए का इट्स 138. इतना डिफरेंस कैसे हो सकता है? इतना डिफरेंस इसलिए हो रहा है बिकॉज ये बफेट इंडिकेटर डज नॉट वर्क इन इंडिया, बिकॉज जो हमारा जीडीपी पोर्ट्रेट है, इट इज नॉट द राइट बाय एनी मींस. क्यों? बिकॉज हमारा एक अनऑर्गेनाइज सेक्टर तो क्लियरली है उसमें, तो आई डोंट थिंक दिस, अगेन मैं बहुत प्रैक्टिकली बात कर रहा हूं. ऑन थ्योरी, ऑन पेपर, यस दिस वर्क्स, बट प्रैक्टिकली आई एम टेलिंग यू हमारा अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, इट इज नॉट काउंटेड फॉर. सो जीडीपी की जो द फिगर वी सी फॉर जीडीपी, इट इज नॉट एक्यूरेट बाय एनी मींस, ठीक है? सो दिस इज व्हाट यू डू. नाउ इफ द बफेट इंडिकेटर 136 फॉर 138% फॉर अमेरिकन मार्केट्स, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है that the markets are overbought right now, so we should sell. Again this is one theory, ठीक है? जैसे डाउ थ्योरी है, so if you see डाउ थ्योरी बाय दे दिया, so all these theories like always ये पूरा टाइम इसको क्रिस क्रॉस करते रहेंगे. so it's very important for you. अब you can ask me, Harsh, then which theory to follow? ये theory ये बोलती है, ये theory वो बोलती है,
राइट. सो वो ये टू कोट हावर्ड मार्क्स, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग होता क्या है दैट एवरी टाइम यू फील दैट आज मुझे पता चला दैट दिस इज द थ्योरी दैट विल चेंज द मार्केट. हर रोज आपको होगा कि आज भाई मुझे गेम समझ आ गया. ये हर रोज होता है. एंड एवरी डे यू फाइंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, right? But it's very important to stick to the basics. So stick to your strategy. So this is one strategy to see how are markets valued on an overall perspective, on a macro perspective. अब अगर आपने देखा कि बफर इंडिकेटर 100% के नीचे आ गया है, तब you will decide what specific sectors to buy. फिर आप माइक्रो में जाओगे. ठीक है? Okay. Then there is, okay, this is Lakshmi Shankar. Hi Lakshmi. Sir, confusion 76 and 54. ठीक है. Lakshmi, for Indian markets, जैसे American markets के लिए मैं फिर से शेयर करता हूँ स्क्रीन. So जैसे आप देख रहे हो, for American markets, Buffett indicator should be at 100%. Again, Buffett indicator, what is the Buffett indicator formula? Total market capital of the exchange upon GDP of that country into 100. That is why it comes into percentile. और Buffett indicator हमेशा percentile में ही आएगा. तो इनका स्टैंडर्ड क्या है? 100. 100 के ऊपर अमेरिकन इंडेक्स सेल, 100 के नीचे बाय. इंडिया के लिए वो 100 नहीं है. इंडिया के लिए वो 76 है. तो 76 के ऊपर बाय, 76 के नीचे, सॉरी 76 के ऊपर सेल, 76 के नीचे बाय. Now, what is 54? India का वो standard क्या buffer indicator का 76. Why is that? Because India is not an organized economy GDP wise. That is why it's 76. दूसरा ये अभी buffer indicator in India is 54. If it's 54, इसका मतलब खरीदना चाहिए. So which is not the case. Both see all the markets. We follow the American markets. Dow Jones आप देखोगे जहां जाता है, जहां भी जिस डायरेक्शन में खुलेगा या बंद करेगा. If you see the Dow Jones last day and next day if you open NSE BSE, 90% chances are वो same proportion में ऊपर जाएगा. So can there be such a big difference between American exchange and Indian exchange? इतना possible है? नहीं. So that is why, because हमारा जो Indian indicator है वो सही नहीं है. The Buffett indicator does not work in India. Why? Because our GDP is not portrayed in the right figures because of unorganized sectors, because of black money and other several factors. ठीक है? So this was the Buffett indicator. So let me just see if I haven't missed anything. Right? So this is what Warren Buffett says, that this is the ultimate truth. So whenever, if you quote Warren Buffett, you can also take it as a major principle for him. So whenever Warren Buffett invests or moves out of the market, it's because of this. Okay? So again, like I told you, it is one of his principles. He discovered this, he's invented this, and he strictly follows this. So अब logically देखोगे, it makes a lot of logical sense because ये पूरा market capital country का, it compares to the GDP. Right? So my friends, this was the Buffett indicator. Right? And this is how you should use it. So what I want, आपने सब समझ लिया Buffett indicator के बारे में, but still I want you to study about it, research about it, उसको और explore करो. Right? Okay. Miraj Ali. Hi Miraj. Sir, do you mean Buffett indicator is irrelevant due to Indian black economy? Yes. Buffett indicator in our country is irrelevant. But हम US का देख सकते हैं. US और American markets, US and Indian markets are always moving in the same direction proportionately. तो अगर US का markets 100 के नीचे Buffett indicator आ गया है, इसका मतलब Indian markets are also at a good position. तो आप समझो मैं इस relevance से ड्रॉ कर रहा हूँ. Do not use Buffett indicator directly in Indian markets, but use them via a guiding factor with the American markets. Okay. So hi Dilip. Hi Dilip. So 76 के ऊपर sell and vice versa. Dilip नहीं. मैं तो आपको 76 बता रहा हूँ, बट हमें 76 वाला बफेट इंडिकेटर जो इंडिया का है वो यूज नहीं करना है. इंडिया में हमें बफेट इंडिकेटर यूज नहीं करना है बिकॉज इट डज नॉट शो एक्यूरेट पिक्चर. हम अमेरिका का ही यूज करेंगे एंड अकॉर्डिंग टू द अमेरिकन मार्केट वी कैन सी कि हमारे मार्केट भी ओवर वैल्यूड या अंडर वैल्यूड है बिकॉज बहुत अमेरिकन इंडियन मार्केट सेम सिचुएशन में ही चलते हैं. ठीक है. So Amit, sir, request you to share today's recording since I missed half of the seminar. Amit, you will get the recording. वो मैं community में post कर दूंगा, but recording will be for 3 days itself. उसके बाद expire कर जाएगी. But within a couple of weeks हमारा पूरा webinar vault मिल जाएगा जहाँ पे you'll get all these recordings. Right? Okay. So perfect. ठीक है? Clear हो गया? So this is how you study on a macro level. So इसके बाद दोबारा पढ़ना है and tell me how you like it. ठीक है? मुझे तो especially I really find it really inspiring this indicator. Okay. Now, second thing in schedule. पहले हम डिसाइड किया मैक्रो क्या होता है. We want to discuss the buffer indicator. Now I want to talk about a little book of value investing, and like I told you, it's my favorite book. So Christopher Brown. Now I know a lot of you have ordered this book. आपने ऑर्डर की है और आपको बुक अभी तक नहीं मिली है. Why? Because of the lockdown situation, our supply chains are completely broken. जिससे हम खरीदते थे बुक्स, उसकी supply chain आ नहीं रही है. So as and when it's available, you will get it, but you will get all your bonus books, whichever you opted for, definitely. ठीक है? So you don't have to worry about that. ठीक है. Now going with this book, the little book of value investing by Christopher Brown, and मतलब ये मेरी फेवरेट बुक है. Just to show you, मतलब अगर आप देखोगे, this is the amount of times I have read this book, right? So yes, this book को मैंने पूरा color down कर चुका हूँ to make notes, and I keep reading this again and again. I feel this book has so many layers that every time I understand something different. ठीक है. So I want to share something with you. मैंने इसके question निकाल रखे थे. Just a second, guys.
ठीक है. So अब आई वॉन्ट टू रीड दिस पैसेज आउट फॉर यू टुडे. और ये बहुत जरूरी है. वाई? पहले तो हमने चलो मैक्रो में देख लिया, राइट? मैक्रो लेवल पे वी अंडरस्टूड व्हाट द मार्केट्स आर. अब how do you judge a share on the micro level? Now this book asks three simple questions. According to Christopher Brown, when you're buying a stock, again I'm talking about the long term. Again guys, जो Buffett indicator मैंने आपको बताया, this does not work for short term traders. ये book is not for short term trades or short term traders. अभी मैं long term investment की बात कर रहा हूँ, ठीक है? So please don't try in using a Buffett indicator for the short term. It is not for short term, ठीक है? It is for the long term fundamental investing. Today I want to keep it strictly fundamental. Now what Christopher Brown says that if you want to buy a stock, you should ask these three questions, right? Start asking these three questions. Question number one: what is the outlook for pricing company's product? Can the companies raise the price of the product? Question number one: this author says कि जो आपको पूछना चाहिए कि जो आपकी कंपनी है, can it raise the price of its product? Can your investment, can it raise the price of its product? अब think about it. If it's a steel industry, can Tata Steel raise the price extremely high और भूषण स्टील की प्राइस कम है टाटा स्टील ऊपर, कभी ऐसा पॉसिबल है? नहीं. फिर टाटा स्टील itself will go in losses. So आप देखोगे every company नो वो प्राइसेस अपनी सेक्टर के हिसाब से फिक्स करती है. It fixes the prices according to the sector price, right? Same for crude oil, same for steel, right? But there is one differentiating factor जिसमें a company can demand its own price, and that differentiating factor is brand. It's a brand. Which I'm not carrying that pen right now. चलो मैं आपको दिखाता. वरना suppose if you have a 10 rupees ball pen, right? Do I have a pen here? Do I have a pen here? Just a second, guys. No. Acha, I have a pen here. Yes. Right. Now, if I have this pen, okay, this is Reynolds. I don't know if you can see it or not. So this is a Reynolds pen. Okay, जो normal आता है 10 rupees का. Now, on this pen, if I have a 10 rupees ball pen, यहाँ पे Adgel लिखा हो, Link लिखा हो, Cello हो, या फिर Reynolds ho. Does it matter to you? Does it bother what brand this pen is when you're using this pen? Doesn't matter. Right. Now I don't have that pen. Up if you use a Mont Blanc pen, does that matter to you? Yes. As you Mont Blanc pen, if you use that, that matters to you. So what is a brand? A brand is a promise of quality. The brand of Parker matters to you. The brand of Adidas or Supreme, या फिर Nike, that matters to you. Why? Because the brand is just a promise. Okay? So first thing what he says, that you should invest in companies that have a brand, because then they can demand their own prices. A Mont Blanc, apne pens, it can increase its price from 20,000 to 50,000 to 1 lakh to 3 lakhs to 10 lakhs. Nobody can stop it, and demand will always be there. But Reynolds or Adgel, can they increase the prices of these products? No, because the brand does not matter. If this is expensive, we'll buy some other thing. If that is expensive, we'll buy some other thing. Right? So that is question number one. So today I want you to understand, again, keep on writing everything down. I want you to understand that what जो भी आपकी investments हैं, what brands are there? ठीक है? Are they in a position to increase the prices? Are they market leaders or are they not market leaders? Right? Okay, guys, now I'm finishing the question. Now I know there are a lot of questions here. उसको हम Q&A session में लेंगे. So I just want to wrap up these questions real fast. First question clear हो गया? Then second question: can the company sell more? Can the company sell more? What does this mean? If you ask this question, it means, is the company scalable or not? Is the company scalable or not? Now, I always say this when it goes for Coca-Cola, right? Now, the business of Coca-Cola is highly scalable. Why is that? They can sell in all countries of the world, and they can sell water, juices, cold drinks, soft drinks, mixtures. They can sell so many things. So if you see Coca-Cola itself, it produces up to 880 non-alcoholic beverages. 880 non-alcoholic beverages all over the world. Coca-Cola 880 drinks banata hai. Can you imagine? So it is scalable from country point of view also, and scalable from products point of view also. Okay? So let's take Adidas for example. Now, if Adidas for example, Adidas can again sell in any country of the world, right? And it can sell fashion. फिर वो बेच सकता है shoes, then sports shoes, then sneakers, a lot of things. So your business should be extremely scalable. So the third question you should always ask yourself, second question you should ask yourself, that जिस business में आपने invest किया है, can it scale? हाँ वो India level पर है, but can it scale to international borders? Can it scale to other areas or not? ठीक है? So first question, can the company raise the price of the product? Second question, can it sell more? And the final question, the question number 3, again, there are lots of questions, there's about 17 questions there. I'm only putting my top 3. So can the company increase the profits on existing sales?
कैन द कंपनी इंक्रीज द प्रॉफिट ऑन एग्जिस्टिंग सेल्स, जो अभी सेल हो रही है क्या कंपनी उसमें अपना प्रॉफिट मार्जिन बढ़ा सकती है? ठीक है, अगेन दिस पॉइंट कम्स ऑन ब्रांडिंग। ठीक है, इफ यू डू नॉट हैव ब्रांड्स यू कैन नॉट इंक्रीज द प्रॉफिट मार्जिन। अब प्रॉफिट मार्जिन कैसे बढ़ता है? दो तरीके हैं, या तो यू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और यू इंक्रीज द प्राइस। Now, the price of this product can only be increased if there's a brand here, otherwise they cannot increase it, or if they are the market leaders here, right? So if you see Intel processors, they're the complete market leaders, right? So after Apple, it's Intel processors. They increase the price. AMD processors, अगर आप digital tech में आप देखोगे उनका complete monopoly है, right? So they can obviously manipulate the price. Such second situation, क्या इसकी production cost कम हो सकती है? Now, when will the production cost reduce? The production cost will reduce when the company is scaling. वो जितना मेजॉरिटी में प्रोड्यूस करेंगे उतना ही उनको चीपर पड़ता जाएगा, राइट? सो इफ देयर वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग केस स्टडी आई वाज सीइंग, द केस स्टडी बिटवीन इंडिया एंड चाइना। व्हाई डिड चाइना ओवरटेक इंडिया सो मच? वेल, बोथ ऑफ अस अगर देखो, चाइना एंड इन 2000 दे वर स्टैंडिंग टुगेदर, राइट? चाइना वाज अगेन अ फुल्ली एग्रीकल्चरल बेस्ड इकोनॉमी लाइक इंडिया, बट ग्रो करते करते चाइना तो यहां तक चला गया, इंडिया इज जस्ट हियर स्टिल, राइट? One of the major reasons is that China में cost of production is very low. Why? Because they play on volumes. So is your company planning to expand volumes? Does it have the capacity to expand your volumes? Right? So these are the three questions. So first, today we did the Buffett indicator. Okay? Again, Buffett indicator is on the macro level. You cannot choose it to buy a share. Buffett indicator cannot be used in India. It cannot be used in our index. So 76 वगैरह, forget it. It cannot be used in our country. Buffett indicator can only be used in the US markets, and the indicator is, the benchmark for that is 100%. So when the Buffett indicator in USA is above 100%, you buy. It's below 100%, you sell. Right? And again, if there's any confusion, you can always watch this webinar again. And उसके बाद भी बचता है, feel free to mail me. ठीक है, ये हो गया. And then we did 3 questions from the little book of value investing, right? And guys, a lot of times हो सकता है you are must be reading several stock market books, I'm sure. अगर आपको ऐसा हो रहा है, कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, you have a doubt, please be sure to mail it to me, right? Click a picture of that, whatever that para is, उसको highlight करो, मुझे mail करो, so that I can make you understand. और community में all of you are doing a great job, but the books you're reading now, it's very important to share such lessons, right? So knowledge बांटने से बढ़ती है, right? So whatever book you're reading, share it with people, so that people जिन्होंने वो book नहीं पढ़ी है और have not started reading a book, they can obviously gain with it. ठीक है? So yes, that was it for today, and reminding you again, office hours, these office hours, the recording will be available to you. Link I'm going to drop in the community itself. I would link आज शाम तक drop हो जाएगा community में, and this will be active for 3 days. 3 days itself, 3 days ज़्यादा active नहीं रहेगा ये, और हम वो अपना जो webinar portal है वो बना रहे हैं, वो सबको मिलेगा, उसके लिए कुछ extra charge नहीं, so don't think about that. वो सबको accessible होगा. I think it will take a week or so. वो जैसे ही बनेगा, it will be shipped to all of you. You'll be informed on mail itself, right? So you'll find all these webinars there. Okay, so let's start now with the Q&A session, guys. ठीक है, so let's 10-15 minutes Q&A session लेते हैं. अब मैं एकदम end में जा रहा हूँ. ठीक है. Okay, so guys, let's do one thing. I'm focusing on the chat box. ठीक है, so chat box में अपने questions डालते रहो, क्योंकि काफी लोगों ने chat box में डाले, so I'm focusing on the chat box. Right? So okay, Rohit Bhatia. Hi Rohit. But we add 30 to 45% of GDP to GDP for black money. Can Buffett indicator help? See, Rohit, ये अच्छा idea है. क्या बोलूँ कि जो black money का amount हम add कर देते हैं. बट अगेन ये फैक्चुअल थोड़ी है, ये तो बहुत ही वेग इंडिकेटर हो जाएगा कि इफ इट्स 30 to 35, टू बी ऑनेस्ट इट कैन बी वे मोर, राइट? इट कैन बी वे मोर. इसके लिए कोई नंबर नहीं है. दे प्रेडिक्ट. तो डिमोनेटाइजेशन के पहले बोलते हैं 50% इकोनॉमी 50 to 60% ब्लैक में है. अब डिमोनेटाइजेशन के बाद बोलते हैं 30 to 35% ब्लैक इकोनॉमी है. बट अगेन इसका कुछ फैक्चुअल फिगर नहीं है, सो बेटर तरीका वही है जो मैंने आपसे शेयर किया. ओके, देन कार्तिक अरोड़ा. हाय कार्तिक सर, सो व्हाट इंडिकेटर कैन वी यूज फॉर इंडिया? Karthik, best. So if you want to indulge the Buffett indicator, so track the Buffett indicator on the American market itself. और जब अमेरिकन में बाय दे तो इंडिया का भी बाय दे देगा, because both Indian American markets बहुत fast रहते हैं. Otherwise, I would say Dow Theory is a great and PE index. So if you calculate index, that is also a good thing. Okay. Shriyansh, how to set Buffett charts? अच्छा श्रेयांश, इसके कोई चार्ट्स नहीं होते, यू गूगल इट, यू विल फाइंड इट. ठीक है, तो जैसे इंडिया में इसकी कैलकुलेशंस करना बड़ा मुश्किल है. नाउ आई वाज ट्राइंग टू कैलकुलेट इट, सो व्हाट आई डिड, एक तो मैंने एनएससी की वेबसाइट से आई डाउनलोडेड देयर एक्सेल शीट, सो मैंने इनके सारे मार्केट कैपिटल ऐड कर लिया. आज सुबह में कर रहा था. सो द एंटायर मार्केट कैपिटल ऑफ एनएससी, फन फैक्ट, इज 109 लाख करोड़. 109 lakh crores, right? So there are 12 zeros in it, right? So 109 and then 12 zeros in it. So and 1 trillion is 1 lakh crores. तो आप इसको लगा लो कि it's 109 trillion. 109 ट्रिलियन की पूरी हमारी वो है, क्या कहते हैं, 109 ट्रिलियन की पूरी मार्केट कैपिटल एनएससी का है, राइट? तो बीएससी का भी अराउंड सेम ही होगा. नाउ जीडीपी इट वाज शोइंग 2.1 ट्रिलियन, राइट? So if you want to see GDP and macro facts of any countries, so best website है tradingeconomics.com.
tradingeconomics.com, wherein you can check everything and all the economical facts about the country, what's the country's rating, what is their GDP, and every country. So वहाँ पे इंडिया का था, it was 2.1 trillion, तभी भी calculate नहीं हो रहा था. So what I calculated, it was coming above 90, but the article I read of Economic Times is that it was 54. So again, हो तो उसके facts complete ना, so that is why I'm saying India में इतना useful नहीं है. Okay. Athiman, hi Athiman, you prefer which type of investing? अच्छा, Athiman, see, it completely depends on your portfolio. I know, I prefer funnels. ठीक है, macro देखो, then you look at the micro and then filter set करो and you buy the stock. अब हो क्या रहा है, we are जो हमारा current ISMA program है, right? We are revamping it completely. इसमें बहुत चीजें ऐड करने वाले हैं. मेरा इस महीने पूरा focus will be on the community and this itself. So you'll be getting a lot of new content. So उसमें मैं आपको clearly समझाता रहूँगा. But this is what I prefer. I like value investing. So सबका अपना nature होता है. I'm more bent towards this. So if you're bent towards trading and technicals, that is also great. ठीक है. Dilip, so 100% is it's we follow. Yes, but again Dilip, 100% should be on the American index itself. वो Indian index में काम नहीं करेगा, सिर्फ American index. अच्छा, मैंने आपको I think समझाने के सबको बताया था, but I think it might get a little confusing, but only on the American index. Okay, Krish. Hi Krish. What about the service and researching companies? How can we apply this to service company? Please provide an example, sir. ठीक है, Krish. Again, this is not company specific. This is ये country basis पर है, ये macro है. अब मैं आपको देखो इसके वो क्या है? I'm taking market capital of the entire index and GDP of the country. तो ये एक इंडस्ट्री पे तो है ही नहीं, ये पूरे कंट्री पर है. सो दिस इज नॉट द राइट टूल फॉर इंडस्ट्री एनालिसिस. ठीक है. चिराग, हाउ टू ट्रेड थ्रू सपोर्ट एंड रेजिस्टेंसेस. ठीक है. ओके चिराग, ये तो हमने पूरे इसमें कोर्स में हो गई. अगर तभी भी आपको डाउट है, यू कैन सेंड अ मेल टू आदित्य ऑन aditya@goilasf.in और यू कैन शेड्यूल अ कॉल विद हिम. कॉल शेड्यूल करने के लिए info@goilasf.in पे मेल करो. आरती विल गिव यू टाइमिंग्स wherein you can choose the timings you're available at, और वहां पे आप कनेक्ट कर सकते हो मुझसे भी, आदित्य से भी. सो चिराग, एक बार वो देख लेना. तो व्हाट आई रेकमेंड, एक बार सीधा वीडियो अगेन जो सपोर्ट रेजिस्टेंस थी, फिर उसके बाद भी समझ नहीं आ रहा, नो इश्यूज, सीधा आदित्य के साथ कॉल शेड्यूल करो, विल सॉर्ट इट आउट. राइट. then Dhruv, hey Dhruv, okay, if using BI, buffer indicator, should one sell all his long term shares like Coca-Cola? Yes, one should sell everything. Okay, so this is how Warren Buffett does it, and I think it makes a lot of logical sense. Okay, now why Dhruv, जैसे आप stock markets में हो, अब you're taking the extra knowledge, you're taking the extra effort to come here to learn new things, तो you're in a position to take more risk, right? तो इसके लिए हम क्या करेंगे, there's an entire cycle, जैसे मैंने ये आज बैठ के I was making this only, right? So आज हम सब ये डिस्कस कर रहे थे. So this is the macro indicators, buffer indicator. तो ये पहले फिल्टर हुआ ये, then this, और ये पूरा जाके then again it comes back to here. So पहले as and when buffer indicator tells you buy, you choose your यहाँ पे you choose again, मैं इसको अभी दिखा नहीं रहा, बट डिटेल में आपको सब आपको मिलेगा. इसको पूरा हम अपना साइकिल फिल्ट्रेशन प्रोसेस डालेंगे. उस फिल्ट्रेशन प्रोसेस के बाद जैसे बफर इंडिकेटर above 100 जाएगा, we'll sell everything, and जैसे बफर इंडिकेटर below 100 आता है, we'll again do that same filtration, buy those stocks and hold again. तो आप देख लो how do we go about it. So yeah, and trust me, ये this is one thing I have followed for ages. ठीक है, and this works beautifully, I can't even tell you. और ये सिस्टम है, सिस्टम आपका बस हल्के हल्के करके बैठ गया, once the system is set, you won't have any problems, right? ओके, अक्षय तथे, हाय अक्षय. सर इसका कुछ टाइम होराइजन होता है? अक्षय नहीं, इसका कुछ टाइम होराइजन नहीं होता है, बिकॉज इन लॉट ऑफ सिचुएशंस दिस डज नॉट गो, एंड सीइंग दिस सिचुएशन में इट वेंट अप टू 138, इट वाज अ लाइफ टाइम हाई फॉर बफेट इंडिकेटर. इसका कोई टाइम होराइजन नहीं है, जस्ट फॉलो द इंडिकेटर्स, दैट्स इट. ओके गाइस, अ कपल ऑफ लास्ट क्वेश्चंस. लोकेश, हाय लोकेश. सर कांट वी इन्वेस्ट इन ETF ऑफ Nasdaq in NSE BSE through BI? अच्छा, Lokesh, nahin. If you want to invest in ETFs of Nasdaq, basically you want to invest in index of Dow Jones and Nasdaq, basically American indexes. So you will need a special type of broker for that, and you will need to invest abroad. Now there are some mutual funds, what I think there are, जो international markets में invest करते हैं, ये BlackRock वगैरह दे रहे हैं, but they're very expensive. So you can, but I always feel that India is definitely better developing it, right? So यहाँ पे the expected growth rate will be much higher than a developed economy any day. Right? But again, saying this, इसके थोड़े bad points भी हैं. Now one of you mailed me and it was brilliant. He wanted to invest in sectors of gaming, mental health, music, and influencer branding. ठीक है, which I feel is very smart. These are the sectors coming up. Gaming sector आ रहा है, influencer branding आ रहा है, ठीक है. Then mental health, जो actually इंडिया में इसकी awareness बहुत फैल रही है, and music. But अभी इंडिया में unfortunately इनके लिए कोई stocks है ही नहीं to invest. Right? So if you are in this specific category, then you can think of investing abroad. Otherwise, अगर इंडिया में available है, तो यही invest कर लो. Okay, Akash Kumar. Hi Akash. From where can we find the movement of Buffett indicator? Akash, Google, just YouTube it. You'll find several websites, several things telling you what the Buffett indicator is. तो आपको मिलता रहेगा. ठीक है? Okay, let's take a couple of last questions. मैं different questions उठाने की कोशिश कर रहा हूँ. So Piyush, hey Piyush, market capital is of index, Nifty or Sensex, etc. or the entire country. अच्छा, see, market capital Piyush is of an index.
तो जैसे अगर इंडिया का लूंगा तो इट कैन बी आइदर बीएसई और आइदर एनएसई, ठीक है। निफ्टी सेंसेक्स आर सॉरी मैं क्या बोल रहा हूँ पीयूष, मार्केट कैपिटल पीयूष इज ऑफ द एक्सचेंज, National Stock Exchange or Bombay Stock Exchange. It is not of Nifty and Sensex. Nifty and Sensex only have 50 and 30 stocks. I want the total market capital, right? I want the total जो 2200 stocks BSE में listed है, मुझे उन सबका market capital चाहिए total करके. जो Nifty NSE में जो 1750 stocks listed हैं, मुझे उन सबका market capital चाहिए. So yes, I want the total market capital of the exchange, not the index, of the exchange. मुझे NSE का total market capital चाहिए. I do not want the total market capital of Nifty. I do not want it for Nifty. I want it for NSE, exchange index. Okay, Soman. Hi, Soman. Sir, if American market is going through crash, are we going to see impact in Indian markets? Soman, definitely. You always, वो मैं आपको बता था कि American and Indian, see, American markets are the influencer. So even if you see on a daily basis, no, if you see the American markets day before, and then in the morning you open the Indian markets, they will react in the same way. If Dow Jones and Nasdaq has gone up, Nifty and Sensex will go up. If Dow Jones and Nasdaq has come down, Nifty and Sensex will come down. In 99% of the cases, it happens. Proportionately, of course, not in the exact proportion नहीं होता है, but होता है. So ये बहुत closely linked है, because हमारा मार्केट, हमारी कंपनी सब वहीं से तो इन्फ्लुएंस्ड है. सो यस, सो दैट इज व्हाई बफर इंडिकेटर हमें अमेरिकन इंडेक्स में यूज करना है, 100% लेके सिर्फ अमेरिकन एक्सचेंजेस के लिए ही यूज करना है, अमेरिकन इकोनॉमी के लिए यूज करना है, और उसके अकॉर्डिंगली वी कैन गेट अ आइडिया फॉर आवरसेल्व्स आल्सो, बिकॉज़ हमारा मार्केट आल्सो वेरी क्लोज टू दैट. Okay, last question दे रहा हूं. Okay, someone, Karan Gumer. Okay, again guys, I've tried ki I want to take different questions from everyone. Again, if you're left with questions, you can mail me, you can mail us, you can schedule a call with us. Right, Karan Gumer. Sir, I feel American markets are already overvalued, but I don't think Indian markets are. I don't know, maybe I'm wrong. So if American market fails, Karan, I disagree with you. Now again, economics and stock market is a game of opinions. So you feel the American markets are overvalued, but Indian markets overvalued nahi hai. But Indian markets overvalued hai. If you see, there's such a massive disparity. See the economic condition right now, and see the stock markets. There's a very massive disparity. अब होता क्या है? In the shorter term, in the shorter period of time, इनके बीच का डिफरेंस को क्या बोलते हैं? इकोनॉमी और स्टॉक मार्केट के बीच का जो डिफरेंस है, इसको बोलते हैं सेंटिमेंट. जो प्राइस डिफरेंस है इकोनॉमिक्स और स्टॉक मार्केट डिफरेंस, दैट्स सेंटिमेंट. बट विद टाइम नो, जैसे मार्केट आगे बढ़ेंगे, इट विल मीट द इकोनॉमी. फिर अगेन वो मार्केट ऐसे नीचे जाएगा, इकोनॉमी ऐसे जाएगी. तो मार्केट मतलब कैसा होता हूँ, लेट मी जस्ट शेयर द स्क्रीन विद यू. तो आई थिंक दिस विल गिव यू अ बेटर आइडिया, राइट? सो वेयर इज माय पेन? सो वी सी ना Karan. एक सेकंड. So let me just make it clear. So if this is the economy, ठीक है ना, मार्केट्स ऐसे जाते हैं, ऐसे, ये ठीक नहीं बनाया मैंने, मार्केट्स पूरे ऐसे जाएंगे, ऐसे, राइट? मार्केट्स विल मूव विद द इकोनॉमी, ठीक है. दिस इज अगेन, दिस इज द इकोनॉमी, दिस इज द स्टॉक मार्केट्स. सो मार्केट्स उल्टा लिख दिया है, क्या हो रहा है आज? ओके, सो दिस इज स्टॉक मार्केट्स, दिस इज द इकोनॉमी, right? So markets will move with the economy and economy will influence the stock markets. But markets ना, जब इकोनॉमी अच्छा करेगी तो वो मार्केट्स बहुत ओवर इन्फ्लेट हो जाएंगे, फिर बहुत कम, ज्यादा डिफ्लेट हो जाएंगे, फिर ओवर इन्फ्लेट हो जाएंगे, फिर डिफ्लेट हो जाएंगे, राइट? सो दिस इज हाउ द नेचर ऑफ मार्केट्स इज. तो इकोनॉमिक्स और मार्केट्स नो ऐसे इंटरैक्ट करती है पूरे टाइम. तो अभी अकॉर्डिंग टू मी, इस इकोनॉमिक मार्केट्स इज हियर, बट सॉरी, इकोनॉमी इज हियर एंड स्टॉक मार्केट इज, तो यहाँ पे बहुत मैसिव गैप है, और इस गैप को ये होता है बिकॉज ऑफ सेंटिमेंट. एंड सेंटिमेंट का क्या होता है ना, सेंटिमेंट का डोमिनो इफेक्ट. सेंटिमेंट ऐसे स्विंग करता है पूरे टाइम, कभी बहुत अच्छा हो गया, कभी नहीं, सब खत्म हो गया, नहीं फिर बहुत अच्छा हो गया. एंड द कोविड-19 सिचुएशन itself, when the lockdown was announced, things were not that bad, but the markets corrected so much. You remember the close down, right? So this is how the markets work. So if you ask me, both Indian and American markets value wise same position में ही रहते हैं, right? And yes, Indian markets are definitely very overvalued right now. Long-term investments, again, long-term investment, Dilip. You should sell all your long-term investments. So if you're doing a SIP, suppose you're putting in 10,000 every month, so 10,000 every month को हटाओ, पहले पूरा कॉर्पस बैंक में डालो, and that 10,000 every month वो कंटिन्यू रहेगा और वो बैंक में जाता रहेगा. See, जो आपकी SIP है, that will never stop. The flow of SIP should and will never stop, right? Only difference is when this is above 100, you will put that money corpus in bank and you will keep on doing SIP in bank. जब वो बफर इंडिकेटर ने 22 ले लिया below 100%, तब आप इसको वापस स्टॉक में डाल दोगे, ये SIP का स्टॉक मार्केट में जाता रहेगा. So this is how it goes about it. ठीक है? So well guys, thank you so much. Time हो गया है, right? So I hope you liked it today. We did